Hello, good evening everyone. I hope everyone is doing well. Please let me know in the chat box. I'm not able to you. Hello. Yes. So we are just going through the chapter quadrilaterals. In the last lecture, we have seen what are the different types of quadrilaterals and what are properties of quadrilaterals and many more. So after that, just for that quadrilateral, we are trying to solve some question based on it. जैसे कि हमने प्रॉपर्टी जो भी देखे थे सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में देखा था फिर रोम्बस स्क्वायर गेटिंग दिस वन ये थोड़ा बहुत याद आ रहा है सबको ओके फाइन देन today we'll start with this question where ABCD is a trapezium. I hope आपको trapezium समझ में आ रहा है trapezium is nothing but आपको ऐसा वाला quadrilateral consider करना है जिसमें कोई एक पैर opposite sides की जो रहेगी it will be a parallelogram. Okay, in which AB parallel to CD and AD equals to BC. Then show that measure of angle C is measure of angle B as well as A and B will be of same measure. So we have to prove the congruency between these two triangles. And the last point is that diagonal AC and diagonal BD are equal. ये सब हमें prove करना है. So for that we just consider one trapezoid here. जैसे आपको बोला गया था AB and CD will be the parallel sides and the given part is that AB and BC are equal. तो आपको ये पता है जब भी आपको एंगल्स के बारे में पूछेंगे या फिर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी चेक करना है ट्रापेजियम मतलब अगर क्वाड्रिलैटरल आपके पास रहता है एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ ट्रायंगल तो कोई एक डायगोनल आपको सिर्फ क्या करना होगा join करना होगा right so that the whole quadrilateral will be parted into two triangles. Next thing is that C and D are equal ये आपको prove करना है ठीक है start करें. So we have this trapezium ABC where AB and CD are parallel and AD equals to BC. तो इक्वालिटी के लिए हम ये साइन बना देते हैं. अगर ये आपको दिखाना है सेम एंगल तो आप क्या प्रूव करोगे आपको ऐसा ट्रायंगल फाइंड आउट करना है जिसमें आपको सी एंड डी क्या मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सी एंड डी अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स चाहिए देन यू कैन डू वन मोर थिंग जैसे आपको सी एंड डी के लिए देखना है बी का भी कैसे रहेगा. सो फॉर दैट वी जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी ऑन द लाइन सी बिकॉज जब तक आपको वो ट्रायंगल नहीं मिलता है तब तक आप चेक नहीं कर सकते. सी एंड डी के बारे में बोलना था अगर यही आपको अपोजिट का केस मिलता देन डेफिनेटली हम ट्राई करते कोई एक डायगोनल जॉइन करके ये प्रूव कर लेता. बट जो आपको सी एंड डी मिल रहा है दिस इज नथिंग बट adjacent angle. So for that we'll just do a construction that we draw perpendicular from A to CD as well as we draw perpendicular from B to CD. Okay. So now we can see there are two triangles जो C and D को करते हैं that is ADM and BCM. Getting this one? So just now look at this. Hello Aditya, how are you? How was your exam? Okay, hello guys. So आप अभी तक करने बोलोगे ये तो हमने कई बार किया अभी कॉन्ग्रुएंसी आप इजीली कर सकते हो. हम तो कंसीडर कर रहे थे परपेंडिकुलर का केस मतलब 90 डिग्री ये तो और भी इजी हो गया. Good. ये तो और भी इजी हो गया. उसके बाद जो आपको इक्वल साइड दिए थे वो भी आप कंसीडर कर सकते हो. सो स्टार्ट विद दिस इन ट्रायंगल ANB and BNC AD and BC are equal. AD and BC are equal. The next case is that we can say AMD is same as BNC because each of 90 degree. And third important case is that ये given part है आपका AB and CD will be parallel lines. If AB and CD are two parallel lines, then आप कोई जो है diagonal transfer से consider करो. Distance between same two parallel lines are equal. ये आपको बताता है. It means that ये जो आपको put up perpendicular मिल रहा है it will be equal as well. Distance between same two parallel lines are equal.
Hence we can use AM is same as BH. Distance between two parallels are equal. So side angle side. Side angle side मतलब is check करो 90 डिग्री का केस मिला था 90 डिग्री का अपोजिट जो आपका रहता है which is nothing but hypotenuse hypotenuse भी आपको इक्वल मिल रहा है and remaining side में से कोई एक साइड आपको क्या मिल रही है इक्वल so we can say that triangle AMD and BNC are congruent triangle AMD and BNC are congruent तो अगर आपको एंगल के बारे में बोलना है then angle is nothing but you will just use CBC that is corresponding parts of congruent triangles are congruent. इसका यूज करके आपको इजीली मिल जाएगा गेटिंग दिस क्लियर हो रहा है ये पूरा नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आपको कुछ ये बोलना है मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल बी के बारे में बट फॉर दैट सिर्फ ए एंड बी को अगर आप करते हैं प्लस करेक्ट सीपीसीडी का यूज करके क्या मिल जाएगा For the next part, for ABCD, आपको ये पता है that AB and CD are parallel lines in the trapezium ABCD. Okay, if this is the case, then इसके बारे में आप क्या बोलते हो? Interior angles are supplementary. Interior angles supplementary आपको क्यों मिलेंगे? Because we say that AB parallel to CD and AD will work as a transverse. AD will work as a transversal. Hence, ये जो आपके मिलेंगे जैसे हमने C वाला केस देखा था करेक्ट C इज नथिंग बट इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री है आपको पता है इट मींस दैट मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल A विल बी 180 जैसे आप ये AD ट्रांसवर्सल कंसीडर करके कर सकते हो वैसे ही सेकंड थिंग हो अगेन AB एंड CD आर पैरेलल बट अभी आपको कमेंट करना है मेजर ऑफ एंगल B पे सो व्हाट वी विल कंसीडर AB and CD are parallel and BC will work as a transversal BC will work as a transversal so what can we say measure of angle B plus measure of angle C which is nothing but C wala is which is but interior angles are supplementary hence B plus C will be 180 but थोड़ा सा चेक करो हमने फर्स्ट में प्रूव क्या किया है we know that C and B are equal angles अगर C and D आपके equal angles रहते हैं and from 2 and 3 आपको मिल रहा था we have two equations जिसकी RHS आपको same मिलेंगे if this is the case then you can say that LHS will be same as well so we say that measure of angle A plus measure of angle B equals to measure of angle B plus measure of angle C correct I think next step क्या रहेगा आप गेस कर पा रहे हो from equation 1 we can say that C and D are equal angles अगर C and D आपके रहते हैं equal then we can replace C with D so दोनों साइड में आपको ये measure of angle D मिलेगा it will get cancelled and you will get measure of angle A it's same as measure of angle B measure of angle it's same as measure of angle B getting this one first two parts clear हो गए कमेंट करो एक बार अगर कोई डाउट है then पूछो okay should we move on for the next one आपको अभी क्या करना है देखो A B C is congruent to B A D ऐसे कुछ आपको प्रूव करना है अगर A B C आपको ट्रायंगल चाहिए देन ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा डायगोनल्स करने पड़ेंगे जॉइन सो दैट जिसके बारे में आपको बोलना है जिसकी कॉन्ग्रुएंसी पे आपको कमेंट करना है वो ट्रायंगल्स आपको दिखाएंगे करेक्ट सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट what you will do here ABC चाहिए correct so you will join AC so that you will get triangle ABC and next thing we will join another triangle as well hence we can see there is a triangle ABD there is a triangle ABD okay तो अभी ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस केस में AD and BC इक्वल रहेगा ये तो गिवन पार्ट है जिस ट्रायंगल के बारे में आप बोल रहे हो उसमें दो वर्टेक्स आपके रहेंगे कॉमन अगर दो वर्टेक्स कॉमन रहते हैं देन जो सेगमेंट आपको मिलेगा वो भी कॉमन रहेगा करेक्ट गेटिंग दिस
ये समझ सकते हो आप? तो फिर check करो and A and B equal है हमने just prove किया था अभी. So in this triangle ABC and BAB, AB equals to AB. The reason is nothing but what correct. Common side. Next one आप क्या consider कर सकते हो देखो. The next given part is that आपको ये मिल रहा था AD and BC are same. So we'll use it. And जो अभी just हमने prove किया था for the second one that A and B are equal. A and B will be the same set of angle and AD and BC are equal. ये तो given part था. So side angle side. It means that SA is criterion से आप ये prove कर सकते हो. नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है ये आप करोगे ना, ये मैं नहीं बोलने वाली आपको. आपको डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी ये क्या करने हैं, इक्वल रहेंगे, ये प्रूव करना है. बट पहले से आपने क्या किया है, ये जो आपको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे इट विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम रहते हैं, ये आपको पता है. सो द ओनली पार्ट इज दैट कैन वी से दैट AC and BD are corresponding parts of these two triangles. ये है क्या, नहीं सिर्फ आपको चेक करना. जिस एंगल के बारे में आपको बता थे, एंगल की अपोजिट जो आपकी साइड थी, एंगल की अपोजिट जो आपकी साइड थी, वो आपको क्या मिलेगी, ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग आप कंसीडर कर सकते हो. हेंस फॉर द फोर्थ वन AC equals to BD, AC equals to BD using CPCT case. Using CPCT case. Okay, done. If you want to take a screenshot, just put. Okay. Should we move on for the next question? ये आपने fourth part में prove कर दिया that AC and BD will be equal. The reason is nothing but CPC. Right? Taking this one. So next point is that midpoint theorem. Next point is nothing but midpoint theorem. So what is midpoint का मतलब क्या है? Midpoint is nothing but obviously आप middle point consider करोगे and you have all about things or this quadrilateral या फिर triangle. Okay. So in a triangle, the line segment joining the midpoints of any two sides is parallel to third side and is half of it. हाफ ऑफ इट इज नथिंग बट जो भी कुछ रहेगा हाफ, मतलब आप 1.2 ये कंसीडर कर सकते हो बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट के बारे में बोल रहे हो. केस सिर्फ ये चेक करना है आपको, अगर आपके पास रहता है ट्रायंगल, ऑब्वियसली कोई दो जो आपके पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे एट द बेस. जो रिमेनिंग रहेगा मुझ जाएगा ऊपर. अगर ये रहता है तो बेस छोड़ के जो भी रिमेनिंग टू साइड्स आपको मिलते हैं उसके मिड पॉइंट्स आपको ज्वाइन करना है. ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब जाएगा आपको प्रूफ के लिए. इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides is parallel. तो सबसे पहले ये कंसीडर करो, जैसे मैंने आपको बोला बेस छोड़ के जो आपको रिमेनिंग टू साइड्स मिलते हैं इसके लिए आप सबसे पहले चेक करते हैं. ओके, सो सपोज AB एंड AC के मिड पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे एंड विल जस्ट ड्रॉ. ये जो आप बोल रहे थे, हम जो मिड पॉइंट ए बी एंड AC का कंसीडर करने वाले थे, सिमिलरली आप AB एंड BC का भी ले सकते हो. ओनली फॉर इन दिस थ्योरम थोड़ा इजी जाएगा, दिखने के लिए इजी जाएगा, मतलब वो पैरेलल है कि नहीं फिर से आपको समझ में आ जाएगा. इसके लिए हम AB एंड AC के मिड पॉइंट्स कंसीडर करें. ओके, गेटिंग दिस वन? Fine. So we'll just consider sides AB and AC and we have to consider midpoints of it. So let P be the midpoint of AB and Q be the midpoint of AC. Q be the midpoint of AC. If this is the case,
देन आपको प्रूव क्या करना है, देखो जो भी रहेगा लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, मतलब पी एंड क्यू को आपको करना है जॉइन। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो रहेगा इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड, ये आपको प्रूव करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज हाफ ऑफ इट, मतलब ये जो लेंथ सेगमेंट आपको मिल रहा है आपको उसके बारे में भी चेक करना है, करेक्ट। सो पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये आपको करना है प्रूव। नेक्स्ट वन इज दैट दिस लेंथ सेगमेंट इज हाफ ऑफ बी सी, ये भी आपको करना है। ट्राई करें थे, कोशिश करते हैं। देखो आपको क्या चाहिए, आपको प्रूव करना है कुछ ये वाला पार्ट। अगर ये रहता है एबीसी तो ये आपने पीक्यू तो कर दिया, आपको प्रूव करना था पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। बट अगर ये आपको प्रूव करना है तो पैरेलल लाइंस अगर रहते हैं तो ट्रांसवर्सल को ये रहेगा, तो एंगल के बारे में आप कई ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, राइट। वो सी वाला रहेगा या जेड वाला रहेगा, ये हमने बहुत कुछ देखा है। सिमिलरली उसका बस भी यूज कर सकते हो। So we'll just start with it. In the triangle ABC, points P and Q are midpoints of side AB and AC respectively. देखो जो आपके पास रहता है थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करके आपने सबसे पहले डायग्राम बना दी। डायग्राम बनाने के बाद जो भी कुछ आपने डायग्राम में किया है, जो आपको मिल रहा था, कौन किसका मिड पॉइंट था, क्या आप ज्वाइन कर रहे हो, ये सिर्फ आपको लिखना है, हम अलग कुछ भी नहीं कर रहे। सो इन ट्रायंगल एबीसी P and Q are midpoints of AB and AC respectively. So what we have to consider, ये आपको क्या मिल रहा है, this will be a parallel, means that PQ and BC will be parallel and says it's half of this, correct। तो ये हमने प्रूव किया था मिड पॉइंट थ्योरम से, मतलब अगर वो मिड पॉइंट्स रहते हैं वो आप ज्वाइन करते हो तो जो लाइन सेगमेंट रहेगा इट विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ दैट ट्रायंगल, ये आपने प्रूव किया। उसी का कॉन्वर्स क्या रहेगा, कॉन्वर्स इज नथिंग बट अगर आपको ऐसी कुछ लाइन मिलती है व्हिच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन वी कैन से दैट जो आप साइड को मिल सकता है। सी इफ अ लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle, मतलब किसी एक का आप midpoint कंसीडर करोगे, सपोज ये आपका ए बी रहेगा, ए बी का midpoint अगेन हम कंसीडर करते हैं पी, ये आपको पता है ये फिक्स पॉइंट है, दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। क्वेश्चन आप क्या प्रूव कर सकते हो, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इज नथिंग बट अगर आपने किसी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ दी, लाइन ड्रॉ कर दी which will be parallel to the base, then we can say that the line segment will bisect the third side। Happy sir, okay, hello, good evening, getting this, कॉन्वर्स समझ में आ रहा है। अगर थ्योरम अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आप कॉन्वर्स भी कर सकते हो। थ्योरम में गिवन पार्ट क्या रहेगा, ये आपको पता है दैट किसी एक साइड के मिड पॉइंट से आप ऐसी वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हो व्हिच इज पैरेलल टू द सेकंड साइड। इफ दिस इज द केस, फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट लिया, सेकेंड साइड के पैरेलल के लिए आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इफ दिस इज द केस देन ये जो आपको मिलेगा लाइन सेगमेंट एंड थर्ड का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, इट विल बी मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड, it will be midpoint of the third side। PQ and BC are parallel lines, if this is the case then it will bisect the third side। मतलब आप क्या बोल सकते हो, if given ABC, P is a midpoint of AB and PQ parallel to BC, then we can say that Q is a midpoint of Q is a midpoint of AC should be there, okay। Then Q is a midpoint of AC। Next slide, please। Then obviously आपको थ्योरम प्रूव नहीं करना है, the only case is that using that midpoint theorem and so फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। Getting this now, try करें, पहले ये क्लियर हो जाएगा
पॉइंट थ्योरम कब यूज करना है आपको कब समझ में आएगा आपके पास रहेगा ट्रायंगल इसमें से कहीं आप दो मिड पॉइंट कर रहे हो जॉइन देन इफ दिस इज द केस देन इट विल बी पैरेलल टू द बेसलाइन ये आप कंसीडर कर सकते हैं so in the given question x y z are midpoints of a b b c a c respectively with the given case that ab equals to 5 centimeter ac equals to 9 centimeter and bc equals to 11 centimeter then you have to find what will be value of xy, yz and xz. स्टार्ट करें आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे डेफिनेटली ये पता है कि एटलीस्ट मिड पॉइंट दिए गए हैं मतलब ax एंड bx का वैल्यू आप मुझे बोल सकते हो xy आपको फाइंड आउट करना है बट by एंड cy का वैल्यू आपको मिल जाएगा बिकॉज़ टोटल bc आई थिंक आपको दिया था 11 सेंटीमीटर सो y अगर रहता है मिड पॉइंट सो यू जस्ट हैव टू कंसीडर 11.5 11.2 हियर सी इज द गिवन केस AB आपको मिल रहा था 5 सेंटीमीटर AC अबाउट 9 सेंटीमीटर BC विल बी 11 सेंटीमीटर XY आपको करना है फाइंड स्टार्ट करें सिमिलरली ये जो आपको इंटरनल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है उस ट्रायंगल के सारे साइड्स आपको फाइंड करना है सॉल्यूशन स्टार्ट करें आपको क्या पता है मिड पॉइंट के बारे में देखो we know that AB and BC के मिड पॉइंट जो रहेंगे वो वाली लाइन आप कर रहे हो ड्रॉ अगर आप कमेंट करते हो फॉर दैट XY then we can say that XY is parallel to AC using midpoint theorem and जब आपको parallel मिलता है तब आप एंगल के बारे में यूज कर सकते हो राइट in the triangle ABC, X and Y are midpoints of AB and BC respectively. AB and BC respectively. If this is the case, then using midpoint theorem, what we can say XY is parallel to AC and XY is half of AC. XY is half of AC. तो AC अगर रहता है आपका 9 सेंटीमीटर then XY आप क्या बोलोगे 4.5 सेंटीमीटर getting this one mark का क्वेश्चन है ये सारे सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है और वो मिड पॉइंट थ्योरम क्या रहता है ये आपको समझना है ठीक सिमिलरली क्या आप मुझे yz के लिए बोल सकते हो देखो yz but y is nothing but midpoint of bc z is nothing but midpoint of ac तो आपने क्या किया abc इस ट्रायंगल में ac एंड bc के जो मिड पॉइंट्स थे वो कर दिए जॉइन AC and BC के midpoints को कर दिया है join. If this is the case, then using midpoint theorem, what can you say? ये जो आपको लाइन सेगमेंट मिल रहा है मतलब midpoint join करके जो आपको लाइन सेगमेंट मिल रहा था, it will be parallel to the third side and it is half of the length of AB. सिर्फ आप midpoint theorem का यूज कर रहे हो एक बार xy के लिए किया एक बार yz के लिए एक बार xz के लिए getting this one समझ में आ रही है yes Aditya Rajas can you tell me what will be value of yz here as well as xz का भी आप मुझे बोलो ठीक है do it xz का वैल्यू क्या रहेगा ये अभी इमीडिएटली आपको चैट बॉक्स में शेयर करना है xz आपको क्या मिलेगा x is nothing but midpoint of AB z is nothing but midpoint of AC तो midpoint कर दिए join this is nothing but a line segment joining midpoints of two sides if it is a case then using midpoint theorem what can you say xz is parallel to BC yes Rajesh what will be answer of xz hence xz will be 5.5 centimeter which is nothing but half of 11 centimeter
डन देखिए गुड वेरी गुड आदित्य वेरी गुड राजेश हेलो गना गुड इवनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर वेरी प्लीज ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD, DA respectively. Then show that PQRS is a rectangle. सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं सो दैट क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है करेक्ट वी हैव अ रोम्बस सही हम ड्रॉ करते हैं रोम्बस इज नथिंग बट रोम्बस की प्रॉपर्टीज अपने क्या क्या रखे थे ऑब्वियसली opposite sides will be parallel to each other each and every side will be of equal the only case is that its diagonal cannot be of the same length otherwise आप उसे स्क्वायर करोगे ओके तो ये रहेगा एबीसीडी आपका रोम्बस जिसमें आपको पी क्यू आर एस मिल रहे थे मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी BC, CD and AD respectively. Here रहेंगे आपके midpoints. So if P is the midpoint of it, we can say that AP and PP are equal, C are equal, and so on. We have to prove that PQRS is a rectangle. रेक्टेंगल ही प्रूव करना है इसका मतलब क्या है रेक्टेंगल आपको कब मिलता है ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स आर इक्वल ये तो मिलना ही चाहिए उसके बाद आपको प्रॉपर्टी और मिल रहा था ईच एंड एवरी एंगल विल बी ऑफ 90 ये भी आपको प्रूव करना है करेक्ट स्टार्ट करें फिर आपको दिया गया है रोम्बस के बारे में रोम्बस के प्रॉपर्टीज एक बार थोड़ा याद करने की कोशिश करो रोम्बस प्रॉपर्टी जितने भी हमने देखे थे उस केस में आप क्या बोल सकते हो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर राइट सो फॉर दैट ये डायगोनल ड्रॉ करके आप सबसे पहले कोशिश so draw diagonal AC hence for the triangle ABC, what can you say? ABC के लिए आपको क्या मिल रहा है देखो P and Q are midpoints of AB. P and Q are midpoints of AB, right? Hence midpoint join करके जो आप line segment बनाते हो using midpoint theorem, what can you say? ये जो PQ आपका रहता है PQ will be parallel to AC and the next case is that length of PQ is half of AC. ऐसा कुछ आपको मिलेगा करेक्ट गेटिंग दिस वन सो जो भी आपको मिल रहा है जस्ट यूज द मिड पॉइंट थ्योरम आपको बनी वैसे जैसे हमने इसके लिए किया वैसे ही आप आरएस के लिए भी चेक कर सकते हो इन द ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली and BC respectively. Therefore, PQ is parallel to AC. First one and second is that PQ ये जो आपको मिलेगा length of PQ is nothing but half of AC जिसके पैरेलल आपको मिल रहा था वो वाला so PQ equals to 1/2 of AC ये क्लिक हो रहा है आपको ये समझ में आ रहा है आपको रेक्टेंगल है ये प्रूव करना है अगर रेक्टेंगल रहेगा तो क्या क्या केसेस रहते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज रहते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं फर्स्ट बेसिक थिंग ये रहेगा दैट अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ ओके ये आपको मिलेगा यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हमने प्रूव किया सिमिलरली जो आपने ये AC डायगोनल जॉइन किया था अभी हमने बात की फॉर ट्रायंगल ABC नाउ वी कैन कमेंट फॉर द सेम पॉइंट फॉर ट्रायंगल ADC consider the triangle ADC. तो again ADC में आपको क्या मिलेगा? S is nothing but midpoint of AD. R is nothing but midpoint of CD. तो आपने midpoint join कर दिया तो जो भी कुछ आपको मिल रहा था SR SR के लिए आपको क्या मिलेगा? Using midpoint theorem, we can say that SR is parallel to AC and length of SR is half of AC. Midpoint theorem का आपको सिर्फ यूज करना है, करेक्ट? जो हमने अभी डिस्कस किया, we'll just make a note of it. In triangle ABC, R and S are midpoints of AD and CD respectively. R and S are midpoints of AD and this respectively. Hence, we can say that SR is parallel to AC
SR is parallel to SC and SR equals to half of SC. ओके, सो ये जो 1 2 3 4 आपको मिल रहा है, आप क्या बोल सकते हो फिर फॉर दिस? ऑब्वियसली अगर ये ऐसा कुछ रहेगा, एस आर इज पैरेलल टू एस सी, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो फिर अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये भी केस मिलेगा. एंड एस आर इज हाफ ऑफ एस सी एज वेल एज पी क्यू इज आल्सो हाफ ऑफ एस सी, सो एस आर एंड पी क्यू रहेगा आपका इक्वल, right? Using two cases, first and third one, as PQ is parallel to SC and SR is parallel to SC, hence we can say that PQ is parallel to SR. And next part, आपको क्या मिला? SR is nothing but half of SC, PQ is nothing but half of SC. So from equation 3 and 4, we can say that RHS of these two equations are equal, hence LHS will be same. So PQ equals to SR. PQ equals to this. Then with this, if this is the case, तो आपको सबसे पहले क्या मिला है? PQRS is a parallelogram. Okay? ये क्यों मिला? Opposite sides of parallelogram and orthogonals. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is parallel and equal. So जैसे हमने किया था पूरे ये AC ज्वाइन करके, अगेन आप क्या करते हो? अगर आप करोगे डायगोनल BD ज्वाइन, then you will get a triangle ADB and CDB. अगेन आप मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करोगे सो दैट SP and Q के बारे में आप कुछ बोल सकते हो. क्लियर हो रहा है ये? देखो. So now we'll consider triangle ADP where S is a midpoint of AD and P is a midpoint of AD. So SP is nothing but length segment joining two midpoints of a triangle. Then using point theorem, what can you say? That SP is parallel to BD, SP parallel to BD, and length of SP is half of BD. Okay? क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ रहा है? इसमें सिर्फ आप ये भी कंसीडर कर सकते हो दैट अगर SP पैरेलल टू आपको मिलता है B, then what can you say? SN is parallel to MO. आप सिर्फ मिड जो पॉइंट रहेगा वो कंसीडर करिए. अगर SP and BD रहते पैरेलल, then obviously उसका जो पार्ट आप कंसीडर करोगे SN and MO will be parallel. ठीक है, अगेन ये आप कमेंट कर सकते हो दैट PCR1 yes. SN and MO will be parallel cases. So next part is that अभी आपको क्या मिला? देखो SN and MO are parallel. Just जो हमने पिछले वाले में प्रूव किया था SR and SC are parallel. So उसका अगर आप हाफ लेते हो तो वो भी आपको पैरेलल मिलेगा. So SMON is a parallelogram. SMON is a parallelogram. If it is a case, then आपको क्या करना है? Opposite angles of a parallelogram are equal. Therefore, we can comment MON is same as MSL. जो आपको प्रूव करना है उसमें से हम सिर्फ एक पार्ट ले रहे हैं. ठीक है? But MON आपको क्या मिलेगा? MON is nothing but ये जो C, AC and BD आपके डायगोनल्स थे, हम बात कर रहे थे रोम्बस के लिए. रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या है? That two diagonals are bisector of each other. If it is the case, then MOM आपका रहता है 90 डिग्री. अगर ये रहेगा एंड ये आपको मिल रहा है पैरेललोग्राम, तो आप क्या बोल सकते हो? अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम which is nothing but opposite angles are equal. Hence, we can say that अगर MON आपका रहता है 90 डिग्री का, then MSN will be of 90 डिग्री as well. मतलब ये पैरेललोग्राम था, ये तो आपको मिल रहा था. फर्स्ट वाला हमने पूरा प्रूव किया. ये SR क्यों रहेगा पैरेलल एंड सो ऑन. सिमिलरली आप ये SP एंड RQ के लिए भी कंसीडर कर सकते हो. बट उसके बाद सिर्फ आपको पैरेलल में इतना ही मिल रहा है. मतलब वो पैरेललोग्राम रहेगा ये तो फिक्स हो गया. बट आपको प्रूव करना था रेक्टेंगल के बारे में. तो पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल
डिफर करने के लिए आपका पॉइंट क्या है, आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, दैट अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए तो उसके सारे एंगल्स आपको 90 डिग्री मिलने चाहिए। ये समझ में आ रहा है? जैसे हमने ये एस 90 डिग्री रहेगा प्रूव किया, वैसे ही सबके लिए कर सकते हो। करेक्ट? गेटिंग दिस वन? बिकॉज अगर पैरेललोग्राम है एंड कोई एक एंगल आपका रहता है 90 डिग्री, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये तो है ही। फॉर पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर एस 90 है तो आर भी 90 होना चाहिए, पी भी 90 होना चाहिए। मतलब हमारे पास ऐसा वाला पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है। If it is the case, then we can say that PQRS will be rectangle. If you want to take a screenshot, good. समझ में आ रही है? Yes, Dhanaditya, Rajas. Not exactly this question. इसी टाइप के अगर कुछ अलग क्वेश्चंस आते हैं तो भी कैसे करना ये क्लिक हो रहा है आपको? जो प्रूव करना है, जिस क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बोला है, उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी प्रूव करने की आप कोशिश करो। ठीक है? Here we have the next. Click हो रहा है क्या? Show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of the quadrilateral bisect each other. Midpoint मतलब AD का midpoint S रहेगा, CB का Q and so on. If this is the case, then आप line segment consider कर रहे हो joining midpoints of opposite sides. मतलब PR जैसे मिल रहा है and SQ जैसे मिल रहा है उस हिसाब से। तो आपको प्रूव क्या करना है that ये जो intersector है it will bisect each other, means O will be midpoint of SQ as well as O will be midpoint of PR। ये करना है आपको। quadrilateral चेक करो सबसे पहले that ABCD is a quadrilateral, correct? Then midpoints of the opposite sides, तो सबसे पहले ये क्लियर हो रहा है that P is the midpoint of AB, R is the midpoint of E। वो आप कर रहे हो ज्वाइन, मतलब ये ऐसा कुछ रहेगा। सिमिलरली हम करते हैं AB एंड BC के लिए। ये समझ में आ रहा है? तो प्रूफ ये करना था आपको, ये जो लाइन सेगमेंट रहेंगे, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड विद बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो PR रहेगा एंड ये जो SQ रहेगा, व्हाट कैन यू से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O आपको मिल रहा है, O will work as a midpoint of PR as well as O will work as a midpoint of SQ या फिर QS as well. So to prove that OP equals to OR and OQ equals to OS. ठीक है? Getting this? तो ये जो Q वगैरह पूरा रहेगा, उसके लिए आप सबसे पहले ड्रॉ करो as a construction, consider that we are joining the midpoint, मतलब P Q R S ये आप quadrilateral consider करें। and आपको ये पता है that QS and PR will be diagonals। okay, now next part is that हम करते हैं AC join। ये क्यों? because obviously ये जो सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं it is under the point midpoint theorem। अगर midpoint theorem का यूज करना है तो वो midpoint आपको दिख तो देना चाहिए, right? here we have, सबसे पहले आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये जो आपको मिड पॉइंट्स मिल रहे थे मिड पॉइंट पर दिए ज्वाइन, एंड नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज दैट ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए, अदरवाइज आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज नहीं कर सकते। hence we have joined one of the diagonal, so we can say that in triangle ABC P and Q are but midpoints of AB and BC respectively। अगर midpoint आप कर रहे हो join, then using midpoint theorem you can say that PQ is parallel to AC and it is half of AC। ऐसा कुछ आपको मिलेगा, करेक्ट? तो डाउन करते हैं इन triangle ABC P and Q are midpoints of AB and BC respectively, therefore
PQ and AC will be parallel to each other. PQ and AC parallel to each other. And next part is PQ is half of AC. PQ is half of AC. ये जो हमने ABC के लिए किया वैसे ही आप पूरा बोल सकते हो ABC के लिए. देखो because F and R is nothing but midpoints of AD and CD respectively. तो midpoint किया है आपने join. अगर आप midpoint करते हो join तो आपको क्या मिलेगा? Using midpoint theorem we can say that SR is parallel to AC and length of SR या फिर SR is half of AC. SR is half of AC. Therefore, in triangle ABC, S and R are midpoints. So, using midpoint theorem, we can comment on this. Okay? ये आप कर सकते हो comment. यहाँ तक clear हो रहा है? तो again, using 1 and 3, आप क्या बोल सकते हो? देखो PQ पैरेलल है AC को, SR पैरेलल था AC को. So, using 1 and 3, we can say that PQ is parallel to SR. Using 1 and 3, we can say that PQ is parallel to SR because दोनों भी अगर AC को parallel है तो फिर आप भी बोल सकते हो. And using second and fourth one, आप क्या बोल सकते हो? PQ is half of AC, SR is half of AC. For equation 2 and 4, RHS are equal, hence LHS will be equal as well. So आपको ये मिलेगा PQ equals to SR. अगर ये रहता है कोई एक जैसे हमने इसके लिए प्रूव किया ऑब्वियसली सेकंड भी आपका ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हो. मतलब SP and RQ will be parallel sides and length of it will be equal. So we can comment that PQRS is a parallelogram. PQRS is parallelogram. या तक क्लियर है? बट आपको जो प्रूव करना है जो आपको दिया गया है दैट PR and QS के बारे में it is nothing but diagonals of parallelogram. Diagonals of parallelogram के बारे में आपको क्या पता है? Diagonals PR and QS of a parallelogram PQRS bisect each other. मतलब जो आपको प्रूव करना था वो हो गया आपका प्रूफ. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहेगा इट विल वर्क एज अ मिड पॉइंट फॉर both the diagonals. Hence we can say that OQ and OR are equal as well as OQ and OS are equal. जो आपको प्रूव करना था ये आपको मिल जाए. If you want to take a screenshot, just do it. Okay? समझ में आ रहा है आपको क्या करना है कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज करके आप ये सब कर लो. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एंड इजी भी है. सिर्फ मिड पॉइंट मतलब क्या रहता है ये सब आपको समझना. सी इन द फिगर x is a midpoint of BC and where in xz which is parallel to AB. मतलब आपको मिड पॉइंट का इनवर्स यूज करना है. Segment YZ and AX are parallel, then prove that YC equals to 1/4 of BC. YC equals to 1/4 of BC. अगर सिर्फ आप ध्यान देते हो तो ये अगर प्रूव कर सकते दैट x मिड पॉइंट था ये तो आपको पता था. मतलब पूरा BC का जो भी कुछ आपका वैल्यू रहेगा उसका हाफ आप कंसीडर करोगे x3 के लिए. अगर आप ये प्रूव कर पाए दैट y इज अ मिड पॉइंट ऑफ xc देन हमारा काम डन है. राइट? सो कर देखो क्या पता था आपको x इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. मतलब आपके पास ऐसा एक ट्रायंगल है
जिसका कोई एक फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट ऑफ कंसीडर करेगा एंड आर सेइंग दैट उससे जो भी लाइन जाती है वो सेकेंड साइड को पैरेलल है, करेक्ट। उससे जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो इट इज पैरेलल टू द सेकंड साइड। इफ दिस इज द केस देन व्हाट कैन वी से, ये जो z रहेगा इट विल बी मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड। ये तो हमने किया था, ठीक। या बोल सकते हो नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो yz एंड ax आर पैरेलल साइड्स, then we have to prove that yc is half one fourth of bc। कंसीडर करो सबसे पहले ये पूरा जो आपको ट्रायंगल मिलता है, in the triangle ABC, X is a midpoint of BC and X and AB are parallels. So using converse of midpoint theorem, what can you say? Converse of theorem हमने क्या किया था, देखो जो भी आपके पास ट्रायंगल रहेगा फोर्थ साइड का मिड पॉइंट आप कंसीडर करो, उससे जो लाइन जाएगी वो सेकंड साइड को अगर पैरेलल रहती है, इफ दिस इज द केस then we can say that ये जो लाइन वाला आपका पॉइंट रहेगा it will be midpoint of the third side। so by converse midpoint theorem आपको ये मिल जाएगा। अगर z मिलता है then again जो next part है आपका x y and x ये आप same यूज करो। see in the triangle ABC x is a midpoint of BC and given part is that xz is parallel to AB, it is nothing but a given part, therefore z is the midpoint of AC, z is the midpoint of AC by converse of midpoint theorem can prove this one। ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, मतलब z आपका रहेगा मिड पॉइंट, ये तो फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट कंसीडर करके सेम ऐसा ही अगेन आपको कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है, बट इस केस में आप सिर्फ कंसीडर करोगे ट्रायंगल AXC। AXC अगेन AXC में आपको क्या मिल रहा है, देखो AXC का z मिड पॉइंट था जस्ट अभी हमने प्रूव किया था। सो किसी एक साइड के मिड पॉइंट से आप लाइन कर रहे हो ड्रॉ such that that line segment is parallel to the second side of triangle। if it is the case then we can say that ये जो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ इट ये जो आपका y पॉइंट मिलेगा इट विल बी मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट कंसीडर किया, उससे आपने ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी which is parallel to the second side। if this is the case then y is midpoint of this। So now consider AXC such that Z is a midpoint and ZY is parallel to AX। Using converse midpoint theorem, we can say that Y is the midpoint of AC। In AXC, Z is the midpoint of AC and YZ is parallel to AX। Therefore, using converse of midpoint theorem, we can say that Y is midpoint of XC। y is midpoint of x। अब इसके बारे में देखो, फर्स्ट केस तो ये था that x is a midpoint of BC and again y is a midpoint of XC। so obviously जो आपको प्रूव करना है वो आप कर सकते हो, क्या चेक करो yc is nothing but half of xc because y is the midpoint of xc मतलब लेफ्ट सेगमेंट x जितना भी रहेगा उसका हाफ यूज करोगे इधर yc equals to half of xc। yc equals to half of xc, but we know that xc is nothing but x is a midpoint of bc, therefore xc can be taken as half of bc। xc is nothing but half of bc as x is the midpoint of bc, therefore yc is equal to half रहेगा आपका everything and xy की जगह पे आप पुट करोगे half of bc। so 1/2 into 1/2 is nothing but जो आपको प्रूव करना था ये आपको मिल गया। then समझ में आ रहा है बच्चों, if you want to take a screenshot just go through it।
ओके, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये सब समझ में आ रहा है कि देखो, we are just going to the quadrilaterals. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है एंड इजीली आपको समझ में भी आता है, मतलब कैसे करना है क्या करना है, बिकॉज कंपैरेटिवली नंबर ऑफ थ्योरम्स कम है इसमें, बट जिसके बारे में बोला जाता है, जिस प्रॉपर्टी के बारे में बोला जाता है, वो अच्छे से चेक करो. ओके, हियर again one more typical question which might be asked for many more times. इधर आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा या फिर कुछ लेंथ सेगमेंट कितना रहता है ये तो है, कोई एक आपको प्रूव करना होगा. सी एबीसीडी इज अ ट्रैपेजम. ट्रैपेजम का मतलब क्या रहता है, कोई एक आपको जो अपोजिट पेयर मिलेगा इट विल बी पैरेलल. यहाँ पे आपको ये दिया है AB एंड CD आर पैरेलल. BD is a diagonal and E is a midpoint of AD. B is a diagonal and E is a midpoint of AD. A line drawn through E is parallel to AB intersecting BC at A. मतलब अगेन आपको कॉन्वर्स का यूज करना है, बिकॉज इस ट्रायंगल के बारे में देखो, ABD के ट्रायंगल के लिए जो थ्री साइड्स है, फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट कंसीडर करेंगे. फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट से आप जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, इट विल बी पैरेलल टू द सेकंड साइड. इफ दिस इज द केस देन वी कैन से दैट जो इंटरसेक्ट करेंगे वो लाइन सेगमेंट रिमेनिंग साइड को, थर्ड साइड को, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी midpoint of that side. We have to do that. Then we have to prove that F is the midpoint of BC. Okay, correct है. थोड़ा बहुत आपको भी क्लिक हो रहा होगा अभी. देखो, AB and CD are parallel and BD is a diagonal such that E is a midpoint of AD. A line joining through the E is parallel to AB intersecting BC at F. करते थे. Let us draw point is such that सिर्फ इसके बारे में अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो E1 था ये, that E is a midpoint, therefore AE and ED are equal. As E is a midpoint and EG is parallel to AB, so using converse of midpoint theorem आप ये बोल सकते हो that G is the midpoint of BD. एंड अगेन जो हमने एडीबी में यूज किया वही आप कर सकते हो ट्रायंगल सीडीबी या फिर बीसीडी. ठीक है, वन बाय वन लिखते हैं. इन ट्रायंगल डीएबी E is the midpoint of AD and EG is parallel to AD. Given pattern. So using converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, we can say that G is a midpoint of B. Therefore, तो midpoint ऐसा कुछ मिलेगा. Then complete after this. So the next part, जैसे EG अगर आप बोलते हो parallel, EG same as EF, right? So we can say that EF is parallel to AB. EF is parallel to AB. So now आप इसके बारे में आपको दिया गया था ट्रैपेजम, मतलब अपोजिट जो कोई एक पैर रहेगा, यहाँ पे था CD and AB parallel. अभी जस्ट हमने ये प्रूव किया that EF is parallel to AB. गिवन पार्ट था AB is parallel to CD. अगर EF AB से parallel रहता है and AB CD से parallel रहता है, so definitely you can say that EF and CD are parallel because दोनों भी AB लाइन को आपको parallel मिल रहे हैं. So we can say that EF and CD, EF and CD will be parallel sides. Now, ये जो आपको EF मिल रहा था, instead of writing EF, again आप PG के बारे में देखो, क्या मिल रहा है, देखो GF, GF is parallel to CD. So in the triangle BCD, what can you say that G is the midpoint of BD? अभी just हमने प्रूव किया था. So ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से आप ऐसी वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो पैरेलल रहेगी सेकंड साइड. इफ दिस इज द केस देन थर्ड साइड का ये रहता है मिड पॉइंट. ये हम करते हैं कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे. क्या किया आपने, EF पैरेलल टू CD हमने प्रूव किया, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग EF आपको अभी चाहिए सिर्फ लाइन से, इसके लिए हमने GF
restricted particle. So we know that GF is parallel to CD and G is a midpoint of D. So in triangle BDC, G is a midpoint of D and GF parallel to CD. GF is parallel to CD. So using converse of midpoint theorem, we can say that F is a midpoint of BC. जो आपको करना है. The reason is nothing but by converse of midpoint theorem. Okay, getting this one. If you want to take a screenshot, just go. Okay, should we go on for the next one? यहाँ तक समझ में आ रहा है. हमने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम या तो कॉन्वर्स रहेगा या मिड पॉइंट थ्योरम का कैसे क्या यूज करना है ये हम चेक करेंगे. अगर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है तो ऐसा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई देना चाहिए. दैट्स so now again we have a PQRS is a parallelogram in which A is a midpoint of SR and B is a midpoint of B is a midpoint of PR. Okay, such that B is a point on diagonal PR such that RB is 1/4 of PR. लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने प्रूव किया था उस केस में हमने ये प्रूव किया था बी आपको 1/4 का केस गिवन. Also AB when produces with QR at C. QR at C. ठीक है. Then prove that C is a midpoint of QR. आपको करना क्या है, देखो अगर मिड पॉइंट के बारे में बोला है या तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना पड़ता है या फिर कॉन्वर्स. अगर आपको प्रूव करना है दैट सी इज अ मिड पॉइंट इट मींस दैट आपको ऐसा एक ट्रायंगल कंसीडर करना होगा जिसमें सी आपका थर्ड लाइन पे स्टेटमेंट का केस रहेगा. करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ रहा है. देखो, so PQRS is a parallelogram in which A is a midpoint of SR. In which A is a midpoint of SR. If this is the case, then obviously SA and AR will be equal. B is a point on diagonal PR such that RB is 1/4 of PR. We have to prove that C is the midpoint of QR. मतलब आपको किस ये प्रूव करना है. तो जो भी आपको करना था, we'll just consider the triangle RSQ because RSQ के केस में आपको ये पैरेलल उधर ये सब मिल जाएगा. See, in the triangle RSQ, A is a midpoint of SR. A is a midpoint of SR. तो अगर आप ये प्रूव कर सके that AC and SQ are parallel, तो फिर आप कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हो. एंड पैरेलल साइड्स रहेंगे, ये आपको कब मिलेगा? व्हेन कैन वी से दैट टू साइड्स आर पैरेलल? करते हैं. सी, अगर ये आप प्रूव कर सकते हो AC पैरेलल टू SQ, देन पूरा का हो जाएगा. So check करते हैं. The given part is that RB is 1/4 of PR. RB is 1/4 of PR. We know that PQRS is a parallelogram. If it is a parallelogram, then we know that जो भी diagonals रहते हैं, they will bisect each other. So SQ and PR are nothing but two diagonals, and they are intersecting at point O. They are intersecting at point O. So if it is the case, O will work as a midpoint of QS as well as O will work as a midpoint for PR as well. अगर O रहता है आपका midpoint इस केस में, तो आप क्या बोल सकते हो? OR is half of this, right? PR के केस में O आपको मिलेगा as a midpoint. Hence, PR can be written as 2 times OR. PR can be written as 2 times OR. तो यहाँ कर देते हैं. तो we'll replace this PR by 2 times of OR.
यूज क्या किया हमने, we have a parallelogram and we know that one of the property of parallelogram is the diagonals will bisect each other. So RP can be written as 1 upon 4. ये given part था, RP is equal to 1/4 of PR. So we replace PR by twice of OR. Hence 2 ones are 2 twos are, so you will get RB is equal to half of OR. RB is equal to half of OR, which is same as B will work as a midpoint. B will work as a midpoint of OR. अभी सिर्फ डिस्कस करो इस ट्रायंगल के बारे में। RSO के बारे में आप सब चेक करो। RSO में आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट है, second side का midpoint है B and you are joining these 2 points. So line segment joining midpoints is parallel to the remaining side भी आपको पता है, correct? As B is a midpoint of OR in triangle RSO, A and B are midpoints of SR and OR respectively. A and B are midpoints of SR and OR respectively. Hence, using midpoint theorem, we can say that AB parallel to OS. AB parallel to OS. But we know that ABC are collinear point, ROQ are collinear point. अगर आपको AB parallel to SQ मिल रहा है, then we can say that just extend this line AC parallel to SQ. AC parallel to SQ. Then इतना समझ में आ रहा है। आपको जो प्रूव करना था वो इस पार्ट में, बट सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। सो नाउ विल गो विद द ट्रायंगल RSQ, मतलब ये पूरा ट्रायंगल आप कंसीडर करो। नाउ विल गो विद द ट्रायंगल RSQ, उसमें आपको क्या मिल रहा है, देखो A तो मिड पॉइंट है, ये तो फिक्स पार्ट था, तो ऐसा वाला ट्रायंगल है जिसके फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से आप ऐसी वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो तो विच इज पैरेलल टू द सेकंड साइड। ट्रायंगल में रहते हैं 3 साइड्स, अगर आपको कॉन्वर्स यूज करना है तो फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट से आपको ऐसी वाली लाइन ड्रॉ करनी है विच विल बी पैरेलल टू द सेकंड साइड। इफ इट इज द केस देन जो लाइन सेगमेंट रहती है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा थर्ड साइड से, इट विल वर्क एज अ बाय, करेक्ट? Okay, so we can say that if triangle RSQ, A is the midpoint of RS and AC parallel to QS. Hence, using converse of midpoint theorem, we can say that C is a midpoint of QR. C is a midpoint of QR. जो आपको प्रूव करना है, that's it. If you want to take a screenshot, just go through. Okay, then up to this. क्लियर हो रहा है ये? Should we go for the next question? आपको करना क्या है ये चेक करो। अगर आपको मिड पॉइंट रहेगा ये प्रूव करना है तो आपको कॉन्वर्स का यूज करना होता है। कॉन्वर्स का यूज आप कब कर सकते हो, ऐसा वाला पूरा केस आपको मिलना चाहिए तब। ओके, हाँ, ये जो आप मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहे हो, ये इन अ ट्रायंगल लाइन सेगमेंट, ये जो आप ए बी ए सी कंसीडर कर रहे थे पैरेलल, दिस इज हाफ ऑफ, ये जो मिड पॉइंट थ्योरम आप यूज कर रहे थे उसका अगर प्रूफ चाहिए तो कैसे करना है ये हम कर। ओके, सो जब भी आपको प्रूफ करना होता है जो स्टेटमेंट आपके पास रहेगा, यूजिंग दैट स्टेटमेंट जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम सो दैट यू विल गेट द हिंट दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू। Here in the triangle ABC, we know that P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of AC, and PQ is nothing but a line segment joining this one. So we have to prove that PQ is parallel to BC and PQ is half of BC. So let us just consider
The example. Suppose it is a case that A, C, B like A, B के लिए आप ये midpoint consider करें as the C, where C is the midpoint of AB. If it is the case, then we know that AC equals to BC is half of AB. Midpoint रहता है तो आप लोग क्या करते हो? C is the midpoint of AB. It means that AC equals to BC is equal to half of AB, right? ये आपको कब मिलेगा? जब आप कंसिडर कर रहे थे जो मिड पॉइंट रहेगा उस साइड पे ए बी का ही अगर वो पार्ट रहता है तब भी आप ये प्रूव कर सकते हो। मतलब पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। आप कब कर सकोगे? अगर पी क्यू आपको उसी का पार्ट मिलेगा तब। बट ऑब्वियसली अभी आपको ये पार्ट नहीं मिल रहा है बिकॉज दिस इज अ अनदर लाइन। पी क्यू एंड बी सी ये दो अलग अलग लाइन है जो आपको पैरेलल है ये प्रूव करना है। हाफ ऑफ मतलब मिड पॉइंट का आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज PQ इज नॉट द पार्ट ऑफ BC। इफ इट इज अ केस देन आप सेगमेंट ऐसा कंसीडर करो जो BC एंड के लिए आपको इक्वल मिलेगा। इट मींस दैट एज अ कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया? जो भी लेंथ था BC का उतना ही लेंथ के लिए आपने PQ कर दिया एक्सटेंड। सपोज जो भी BC का लेंथ है उतना आपने PR कंसीडर किया। जो PQ आपके पास है उसमें Q will work as a midpoint। कंस्ट्रक्शन भी आपने क्या किया? PQ is a half of it ऐसा आपने PR कर दिया है। So as a construction, take a point R on the ray PQ such that P dash Q dash R this will be the collinearity and PQ equals to QR। Then after that just join C and R. Draw segment C and R. Right? या तो क्लियर हो रहा है? देखो आपको क्या मिला था? PQ is equal to half of PR। ये तो आपने कंस्ट्रक्शन से किया है बट आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना था PQ is half of BC। सो अगर आप PR एंड BC इक्वल रहेंगे ये प्रूफ कर सकते हो तो सब कुछ हो जाएगा। राइट? आपको मिल रहा था PQ is half of PR, यही तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। आपको प्रूव करना था PQ is equal to half of PC। अगर आप ये दोनों साइड करते हो कंपेयर, अगर आपने सिर्फ इतना प्रूव कर दिया दैट PR and PC are equal then we are done with this theorem। So to this to prove PQ is parallel to BC, तो अगेन अगर पैरेलल है ये आपको प्रूव करना है तो PR and BC भी आपको पैरेलल भी ये प्रूव करने पड़ेंगे। जो दो प्रूफ्स आपको करने थे वो सब हमने कन्वर्ट कर दिए इन टर्म्स ऑफ PQ और PR एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है? सो लेट अस कंसीडर ट्रायंगल AQP एंड CQR बिकॉज ये आपको पता है that Q is the midpoint of AC। If Q is the midpoint of AC, it means that AQ and QC will be equal। Second, by construction आपने ये प्रूव किया था that PQ and QR are equal and if you are able to see this one we can see there is a factor x। factor x आपको क्यों मिलेगा? Because two lines are intersecting तो factor x it means that आप opposite sides are equal का यूज कर सकते हो। okay so congruency पे कमेंट कर सकते हो इस वजह से। in triangle AQP and CQR AQ equals to CQ ये तो given part था। Next case AQP is same as CQR। AQP is same as CQR जो आप बोल रहे थे फैक्टर x। so अगर आपको ऐसे रिजल्ट लिखना है then vertically opposite angle and next one is that PQ equals to QR। यही तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है PQ equals to QR। so using side angle side that is SAS criterion we can say that triangle AQP is congruent to triangle CQR। Triangle AQP is congruent to triangle CQR using SAS criterion। If it is a case, then PAQ is same as RCQ। Corresponding parts of congruent triangles are equal। या फिर corresponding angles of congruent are equal। So आप ये बोल सकते हो अभी that A and C will be equal।
Are you able to see that Z sign? थोड़ा उल्टा पुल्टा आपको मिल रहा है, but we can see there is a Z sign. If it is the case, then we can say that it is nothing but a pair of alternate angle. So we can say that AB will be parallel to CR because using alternate angle test. अगर ए बी पैरेलल टू सी आर मिलेगा आपको विच इज सेम एज पी बी पैरेलल टू सी आर पूरा ए बी लिखने के अलावा हमने सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड पार्ट किया है दैट इज पी बी बिकॉज ये आपके पास पोलिंग है यहाँ तक क्लियर हो रहा है ये समझ में आ रहा है इफ इट इज द केस देन corresponding parts will be equal as well. So we can say that AP equals to CR. The result is nothing but CP. ये ट्रायंगल था पहले से ही पता था ए क्यू एंड क्यू शेयर इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन आपने पी क्यू एंड क्यू आर कर दिया है सो रिमेनिंग जो साइड आपकी रहेगी विल बी दिस ओनली करेक्ट डन अप टू दिस बट आपको ये पता है कि ए बी एंड पी बी इक्वल है बिकॉज पी इज नथिंग बट मिड पॉइंट अगर पी मिड पॉइंट रहेगा देन ए पी इक्वल्स टू पी बी एंड जस्ट अभी हमने प्रूव किया है दैट ए पी एंड सी आर इक्वल सो यूजिंग these two segments. Using these two equations, we can say that as LHS of two equations are equal, hence RHS will be equal as well. So PB equals to CR. मतलब आपको अभी मिला क्या है PB and CR पैरेलल भी है and equal भी है. PB and CR opposite sides are parallel and equal as well. It is nothing but one of the property of parallelogram. Right? Hence, we can say that PBCR is a parallelogram. If it is the case, if it is a parallelogram, then opposite जो भी आपके साइड्स रहते हैं वो इक्वल भी रहेंगे एंड पैरेलल भी रहेंगे उसमें से फर्स्ट हमने यूज किया था PB पैरेलल टू CR था सेकंड आप क्या बोल सकते हो PR पैरेलल टू BC PR पैरेलल टू BC यही तो आपको प्रूव करना था so that जो आप का यूज करके कर पाओगे PQ parallel to BC and PQ is half of PR again by construction because Q is a midpoint तो PQ is nothing but half of this यही तो आपको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट था आपका PQ parallel to BC जो हमने कर दिया सेकंड पार्ट आपको करना था हाफ ऑफ दिस सो हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था दैट Q will be midpoint of this if Q is a midpoint of PR then ये आपको मिल जाएगा राइट बट PR का जो भी रहेगा PR is nothing but अगर आप पैरेललोग्राम के बारे में बोलते हो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल हेंस PR की जगह पे आप BC पुट कर सकते हो सो जो आपको ये PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR मिला था instead of PR we can replace it by BC hence PQ is equal to half of BC जो आपको प्रूव करना था वो हो गया if you want to take a screenshot just go through it डन समझ में आ रहा है ये क्लियर हो रहा है नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे माइट बी ऑन द कमिंग सैटरडे ऑन 6:30 ओके टिल देन बाय बाय